शूट कर रे गांडू. थांब, तू शॉट घेतो, तोड था, थांब जरा. वही शॉट मत लो, चल चल चल. हा शॉट घे बे. हे नाही. ये मत करिए, मत कर. चल अभी अंदर चल सीधे. रिकॉर्डर दो तो हेडफोन भी रखा है. हेडफोन किधर? डोळे बंद ठेव. जावेद तू वो शूट कर. ओके. बेटा ये सब आर्टिफिशियल है. दिस इज द डोम. ओके. आकाश, दिस इज इट. बता मेरे को कैसे कर रहा है. मैं इतनी इससे नहीं करता. ओके, मैं पैन कर रहा हूँ. हाँ. This is the reservoir and the water, and this would finally cover the original temples which were inside the cliff face here, and this is where it was standing. All the water level was coming up to here. So now they've shifted everything up to the new site, in the new temple site, which is here now. Exactly from bottom to the top. Now this, if you can get, that's fine. About 60 meters. लाइट मारना. But having done this, we should move on. Okay? Then relax. No. एक्सपोजर का बटन दबा और अंडे फिल्टर चालू कर. ओके नितिन हट. ये वो बोट है जिसमें ये लोग जैसे नाइट क्रूज होता है ना, चिल मूविंग. जावेद बोट वगैरह थे. आकाश बोटी बरोबर देख. घेतला. बोट आ रही है इसके साथ. माइक कनेक्ट करा. माइक कनेक्ट. जावेद सांग बोलू. कुठे बाबा. स्टैंड बाय. रोलिंग. एक्शन. मिस्र महान स्मारकों की भूमि. मैं अब एक ऐसे मंदिर के सामने खड़ी हूँ जो मिस्र के सबसे बेहतरीन स्मारकों में गिना जाता है, अबू सिम्बल. एक ही पत्थर से तराशा गया ये मंदिर बनवाया गया सबसे बड़े और विचित्र स्वभाव वाले फेरो रामसेस द्वितीय द्वारा. आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मंदिर यहाँ नहीं बल्कि 200 मीटर दूर और 100 मीटर नीचे थे. लेक नासर के बढ़ते पानी में ये डूब ही जाते, लेकिन यूनेस्को के रेस्क्यू ऑपरेशन ने इस मंदिर को बचाने का बेमिसाल काम किया.
शायद उतना ही बेमिसाल जितना इस मंदिर का निर्माण था। Cultural masterpieces of Egypt. Can you believe it? This temple was not here, but 200 meters away and 100 meters lower, because सांग ना. Can you believe that these temples were ते जाऊ दे रे, मी बोललेलं जाऊ दे nearly नंतर. 200 meters away and nearly 100 meters lower सेंटर पे मैं रिकॉर्ड because of the new Aswan. When का where? If that this temple was not here, but Rolling. Wait. Rolling. Action. here we are at the great Abu Simbel temples, one of the greatest architectural monument of Egypt. Can you believe that this temple was not here, but 200 meters away and 100 meters lower, where, because of the Aswan Dam, the rising waters of Lake Nasser would have completely submerged it. This temple was saved by a rescue operation mounted by the UNESCO. One of the greatest achievements of mankind in preserving a heritage which is more than 2000 years old. Yeah? Great. Cut. मैं अगर गिरूंगा तो कैमरा त्याचा जो क्राऊन आहे ना त्याच्यावर मी टिकलो किंवा तू जाऊ दे इथले जे पेंटिंग्स आहेत हे उसके साथ कर लिया था वहाँ पे जो अंदर के स्टैचूज का जो है Very good. Okay, you got now 2 minutes more. ये करके तुम उधर से जाओ तुम आकाश एकदम टाइट e quando lo indossa la sua pelle vuol dire che lui è ancora più forte, quindi lui ha più potere sulla salvezza, sulla tentazione, su tutto, quindi è una persona è pura quante gli angeli, va bene? Allora è di qua
Allora, qua vediamo il santuario. सरक सरक आणि उलट पण करून घ्या. नाही असं तर सिंपल काम झालं. असं करून वर्ण करून असं आणलं कळून जाईल. सरक थोडं मागं झालं. पहिली गोष्ट म्हणजे असं आहे की आकाश माझी फेवरेट शर्ट तुला काल नाही वाटतं. इकडे 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 निघून जाते बरं का. हे बस झालं रे. पायाला जॉईंट्स वगैरे दिसतात ते घेतले का तू? हां हे बघ हे जॉईंट्स वगैरे जे दिसतात ना क्लोज घे टाईट आता सोड. आला ते पक्षी होते. चल आता हे लोक तिकडे जातात नाही बघ. हे बघ. हे बघ आकाश त्या जे लोक निघतायत ना तिथनं बाहेर तिथनं झूम आउट करू शकतो तू. जिथून लोक दिखतायत ना बाहेर तिथनं झूम आउट कर.
झालं ते हे डुबून जायचं असं कर ना खाली खूप खाली कर खालीच आहे ना झूम जाता येतो ना नाही 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 खाली कॅमेरा खाली ठेवून असं खडका वगैरे दिसत त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्ध्या तासापैकी जास्त होऊन गेलं ना शूटिंगला नाही वाईट लावून घ्यायचं हे बघ असं वाईट ठेव वाईट ठेव वाईट आणि तिकीट दाखव यांना Questa collana di gioia raccomuna i suoi aspetti per darlo anche il carico che in realtà la via della gioia e della vita. ये आप 2 शॉट लेके चलिए पास नाही बरं का इकडनं केलं नाही तू और सामान भी बस सब वहीं उसके पास पड़ा हुआ है। Yes, we must run now.
ما في صوت. انت تقول لك ثلاثة الواد اللي بيدفع الفلوس اللي هو اسمه ايه الماسك الحسابات والمواضيع. قايدة قلت لك هو ده اللي هتلاقي ست. البنت مصيعة مصورين اتنين جنب بعض. والله مو important يعني. All that you found it in Libyan Museum. Nothing here. نعم. You have the receipts for this? It's rubbish. Please, don't give any photo for this. It's dirty things. Ask him, don't do this. ما هو انت هتخرج باللانش؟ هيعدي فيه هناك لا بص محل الحاجة هنا رمضان. تعالى يا ريس. رحلوا معاه كده والنبي الحاجة اللي هنا دي رحلوها لي في اللانش اللي واقف هنا ده. هو ما هيقف على مرسى أمون المفروض يكون قاعد. طيب. Silence, silence, please. Can you give your introduction, please? Introduction. Excuse me. What do you know about introduction? About yourself, sir. Can you tell your name and spell it and tell what your My name is Ragih Zahir, creator of the Aswan Museum and all this area, Aswan Island. What is the spelling of your name? Ragheh. Okay. Okay. Can you tell me what are these nilometers for? These things for to see the level of the water, but before build the old dam and new dam. When Egypt built the old dam about 1898, we don't take this nilometer. We don't made this nilometer. Yeah. Yeah. This for see the level of the Nile in specialty in Nigeria and Augustus. The water in the Nile up for the over level we can see the water in this silent. Yeah.
But after Augustus, the water down and down until we can see the water in the end of the water in the Nilometer. Acha, how they used to measure this the water level from these Nilometers? This for 1 day, but another days, tomorrow we can see the water here. Every day the water up like this. Acha, how old are these Nilometers? Ask him about the history. From Pharaonic period and Greek period, Romanic period and Islamic period also. Acha, who made these Nilometers? Sorry. مين اللي عمل Who made these Nilometers? Pharaonic period made this Nilometer from Pharaonic period. What was the purpose to build these Nilometers? Let him say. Why was it built? To see the level of the Nile. Where they used to predict the water level also? Suppose they could they predict the water level in advance, 2-3 months in advance? When see the level of the water, we can see how many then we are make agriculture and the planets in the lands and to see the corns what we plant what we growing in the lands. Yeah. When see the level of the Nile, we know what we grow in this year, corns and another grass like this. From those Nilometers there down there, could they predict that this year the Nile is going to rise till this level? Because we built the high dam, so all the water behind the high dam. No. In ancient times, could they predict from the water level there that the water level is within so and so months is going to rise till this particular the highest level here? Yeah, because in the ancient times, there isn't high dam and old dam, but now there is a high dam, so the water in the Nasser Lake, not here, behind the high dam. So the water, they can't come to here. Acha, can you explain me what is this? What is this on the white stone on the marble? This, yeah, to see the level here, 6, 8, 83, and this is for see the level of the water. And how they used to measure here? Can you start from below? Also like this, the same, but this by signs and this by numbers. Where are the signs here? Yeah, this like this. No, where are the signs? Signs, this is the signs. I see. Yeah. Okay, cut कर. Yeah. Can you explain me? Can you explain me what is the level of the water from each sign? Yeah. How many feet? How many feet? How many feet? This by centimeter. Yeah. This like centimeter. No, suppose water come to that level. This you can see here half a meter to see the water. How many degree up today and tomorrow and all the July and August months. Yeah. But after August, the water down and down and down. We see also how many centimeters the level of the water down and down and down until after the August month, we see the water down in the of the Nile, not here in the Nilometer, but on the Nile. What were the uses of these Nilometers? What were the uses in the sense of crops, taxes, probably? Yeah. The pharaohs must be using these Nilometers for specific purposes. Yeah, the government sees the level of the Nile and to see how many taxes on the farmers, how many pounds, how many corns
the farmers pay to the government for to make taxes on all the grounds. Suppose water level is here. Suppose what? Yeah. How much tax would be the that year? This is ancient time, but now the level of the water not No, here. I'm not talking about now. I'm talking about the ancient Yeah, times. over taxes. If the water come to here, the taxes is over, because the water is many, and we can irrigation all the lands by this level. Okay. Cut. ठीक है बस. Rolling. Huh? Are there used to be some dangers also? Can they used to predict the dangers also that this particular level is a danger? Danger zone, danger marks. The dangers from these levels because the water go to the towns and villages, and the houses damage from the water. So all ancient Egypt built the houses and the schools and every buildings on the highland, not the downland, because the water come to damage all the downs and the village. Okay. Cut. ठीक है बस. This is 6, 8, and 93, and 2, 4, like this. This is the centimeters, the level of the Nile by centimeters. And this? And also this, but not numbers. Only we can see the signs, this like centimeters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I see. And why this? When why? when the water come to here, we can see another meters. I see. Yeah. Made. This Nilometer is from Muhammad Ali period. This is new, but this is old. Achha, why the stone is different? Yeah, different stone. This from Muhammad Ali period, but this from Islamic and ancient Islamic period and Pharaonic period How many also. years old Tel Aviv? About 2,000 years. And this one? But this one about 500 like this. I see. Okay, cut कर. لا ده فوق يعني بس ده اتحط اضافه لده علشان يوضح نفس المنسوب ده. اه असं शॉट पाहिजे की Curate, okay. Of Asman Museum. Also, any particular sign in it which was supposed to be very good that year? Yeah, you can see. But this after. Before the height. But now we don't. لا احنا بقول له يعني دلوقتي ما بنستخدمش، احنا بنستخدم قياس جديد على الناحيه الثانيه في اجهزه متطوره. مودرن. ठीक है बस. Yes. Yeah, please go to the water level. Now in Julia month, so the water is very high. एक मिनट. Please hold on. Ready? Yeah. The water is very high now because in Julia and Augustus months the water come up to a high level, and we saw the water in the Nilometer. But after Augustus, the water come back to the Nile. Not here, not see water here. अच्छा. तिकडचं काम करत आता. पाणी जे नायलोमीटर वरती पाणी अडकले ना. इकडनं गेलं. This Islamic it's 1302.
यानी के लिए वाला है सर। क्या हिल रहा है यार? Muhammad date. These are also 9 millimeters. Yeah. All the signature here 9 millimeters. Ibrahim. Ismail. Ismail. Yeah. चला The son of. ये मिल गया ना इंग्लिश वाली करना ए नीचे आ। ओह सॉरी सॉरी वो जो है ना उर्दू अरबी में 131 फुट है। घेऊ का? वरती हळूहळू सिटी दिसायला लागेल तसं फिरवलं झालं नितीन आपण असं करू ये लोक टुरिस्ट चालले आहेत مش على التصوير. طب ما انا شغلي ان انا امشي معاه. ايوه بس خليك بعيد عشان ما يصورك. هو كده بيصور وهو ماشي؟ اه ماشي. What is all this? دي القرية النوبية من العصر القديم. Thank you, Mr. Zahir. Thank you so much. شكريا. You can say شكريا. Shukriya. Afwan. What did you say? عفوا. Afwan. That means welcome? Not at all. Okay, not at all. Okay. Where will we go to do the shooting of the Nubian village lifestyle Yeah. farming? Where will we go? Which place? Last time. How long will it take to reach? 5-10 minutes? We can walk down? एक पाऊंड घे हट शॉर्टसाठी ते बढवी कशासाठी देऊ? दे मी काय करू? 2 मिनिटात देतो तुला चल झालं काढ रे
निकाल दे नहीं तो मरेगा। जावेद आके ते हे जे दिसतं ना माउंटन हे त्याच्यावरनं त्या मॉस्क वरती आहे. ला दे शॉट के लिए दिया एहसान बोल। थँक यू. हाँ इधर ले ले यार एक This from Pakistan. टेली में हो जाएगा कवर. हाँ हाँ एक ले इतना कोई ये है नहीं उसके जबरदस्त तो कुछ है नहीं कि जाके शूट कर. चलना शुरू कर. एखाद्या दगडाच्या एकदम जवळ घे बाईक. मार दे कांच छोड़ दे तुम लोग तो कुछ नहीं जाएगा। आता काय करू? पगार में से मेरे कटेगा। Some music, Nubian. Welcome. صوركم قدام التلفزيون هندي عادي مفيش مشاكل احنا من وزارة الإعلام حد Nobody have some music. طارق They don't have anything to play music. تعرف تضرب رباط والصبر؟ Yeah, that is what he's shooting. Come. No, but for me, no shooting. No, he is not shooting your face. He can shoot these people, these boys. You can go. Don't. चल रे आकाश. आकाश चल. Yes. New Delhi, but this is 1981. That's This is the way. زي حالك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ बस जा सकता है. Gone to Hajj. bit hello, madam. Leave. What is written over here? Yeah. This Saudi Arabia, he's going to. He's going to or has already gone? No, he's already gone. Already Yeah, gone. by flight. मक्का मदीना का ये घर जाके आए. Going to the farmers now. We are going to the farmers. Yes. G. Akash, मत let shoot them. Can we shoot outside, inside? Can you just ask them? بقول لك فين
ممكن يصوروا ده هنا؟ شرفنا. استأذن انت صاحب بلد. صاحب بلد. لو في راجل استأذن، لو في ست كبيرة قول لها. عايزين يصوروا البيت عندك يا حاجة. احنا وزارة الاعلام. ماشي نو من غير زعل. بس هو مش تلفزيون، مش هيصوروك على التلفزيون اصلا. واحد يروح شجرة عايز تروح له؟ ها؟ واحد يقطع شجرة تروح له؟ Typical village well. Well. The boy will say somebody break the trees. Would take No, not breaking the trees, but I want to take the well. yes, but because you say it's too late. The morning they bring that. في واحد هناك بيفلح تروح له؟ ايه؟ ما قلت له قال لي لا. احنا كده وعادي. مش الزرعة بتاعت البرسيم والكلام ده. Go there. Selfish. Where is the farmer? Where is the farmer? Where is the farmer? चलता ना क्यों? Lamban kina hitri ni tin. Itu an la rete. Okay. شنو هي؟ عايز ايه هو بقى؟ عايز اللي بيعمل المية دي جدوف. جدوف، طنبور وجدوف وكده؟ لا كان الكلام ده It's irrigation from the sea by canal, like that. Many canals like that. تعالي هنا عروسة To تعالي. rise the water for the land. Rampuri. بدي صوص محفظته. خنجر. خلاص تمام. अपने गांव के जैसा लगता है تعالي تقدر يقبل شنو؟ مور محمد يوسف جوز اخت اياد بتاع محمد يوسف كل ده بيعمل حامد. ايه؟ جوز اخت حامد. ما اعرفش انا والله. محمد موسى؟ في حد اسمه محمد موسى هنا خالد؟ استنى يا ابني استنى، اللي هو كان قاعد في ابو سندي في مدينه نصر. ما اعرفوش ده. एक शॉट एक करूँगा ना तो سل انت اللي كبيت المية دي كله؟ سل انت لا انت كبيت ودخلت رميت الشيشة. let them request, let Mr. Ashraf request for a second.
नरेन नितिन का रिक्वेस्ट है मैं रोल केला उसी को पहले डेमोंस्ट्रेट करने बोल। सलाम वालेकुम। नायर गिले जोरात खींच रहा हूं जोरात ओढना आवाज गेला बांध दिला दूर न घे तू थोडंसं आकाश त्यांना पण येऊ दे मध्ये विजय ना जवळ आहे ना तुमच्या त्यांना पण दूर हो ना दूर न घे ना थोडं दूर नच घेतो मी हाऊ You can. Make it strong. लेट हिम हैव इट। तेच तोंडात घालू झाड तेच तोंडात जोरात ओढ ना जोरात खूप जोरात कर ओढ जोरात ओढ ओढ Strong, yeah? व्हेरी स्ट्रॉंग शुक्रिया चल आकाश आपण बस चल रे खालतून घे ना, खालतीचे आवाज येते। आमच्या घरचे झाड केलं just ask her to turn اعمل ايدك الثانية ناحية ايدك كده. ايدك من هنا، ايدك الاثنين، okay ask her to turn ايدك الثانية كده. yeah يلا يلا لازم يكون احسن. بقول لك انا rolling in there the body for elephant okay चलो يلا पुस्तक मध्ये आहे का वापस गया तेरा पैसा त्यांच्या शॉटला आकाश एक फ्रेम करून सोडून दे, त्यांना पास होऊन जाऊ दे ये या शॉटला एक फ्रेम अशी सोडून दे तू करून I think Mr. Ashok, by the time we leave hotel it will be 8:39. I'm telling you. 8:39. We will be leaving between 8:30 and 9 o'clock. Really? Yes. I'm giving you a realistic picture because I know.
going, shooting again. Then we will have to back. We have been shooting the whole day. The batteries we have to recharge. How what happened? How come it got wet? Oh. Should we get onto the other boat and go fast? What fast? Left. Anyway, this way. خش هناك هناك كده 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 كده. हाँ वो पानी उसमें से राउंड 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 वो देखो उसके अंदर से पानी राउंड राउंड करके जाता था वो देख राउंड राउंड करके पानी जाता था शॉर्ट गेम पे बाबू नहीं समझता नहीं है Before the light goes off. बोट पक्षी पाण्यावरती जातात ना जावेद रोलिंग रोलिंग
पीछे बोर्ड भी आना चाहिए। ये रखा है। हिलो मत यार। आकाश ते घेतलं ना ते? पाणी घेतलं ना? पानी मेरा बड़ा बैग है, उसमें से 6 बैटरी चार्ज है, वो उससे कम से कम एंकर हो जाएगा, या तो एंकर नहीं होगा। जब तक आएंगे सब लोकेशन लेके आए। अरे इसे पक्का कर दसरा रे क्या है बघ आकाश बघ झाला ना शूट ले आला आपलं पुढे नदी से बढ़िया निकलता है। Which one? This one. कोई जाने ना कोहरे गाँव मिले नदी। आकाश बघिए क्या हुआ वो उठती हुई। मिले सागर मिले कौन से जल। आपले मुलांचं घेतो मी तिथे जे आपण मगाशी लहान बोट हे केलं ना ते शूट कर पहिले जाईल निघून This wonderful disease. अच्छा वो 6 बैटरी मैंने रखा है 6 है या 4 है याद नहीं है जावे नीचे सरले जरा उल्टा साइड में है रे नहीं नमस्कार he is coming from up na so Okay. he has to say action and then we say namaskar. Say action, dear. नमस्कार सुरभि के अमन सुरभि के जगमगाते ओके नमस्कार अमल सुरभि के जगमगाते संसार में आपका स्वागत है। हमारे पिछले कुछ कार्यक्रमों में आपने मिस्र के अजूबों और गौरवशाली इतिहास की झलक देखी। आज हम आपको मिलाते हैं वहाँ के खुश दिल लोगों से और नज़ारा कराते हैं वहाँ की संस्कृति का। जरा देखें उनमें और हम में कितनी समानता है। Namaskar. Welcome to the scintillating world of Surabhi. You've seen the wonders and glories of Egypt. Glories. Namaskar. Welcome to the scintillating world of Surabhi. You've seen the wonder and glory of Egypt in our program. Now let's meet its people and experience their culture. Namaskar. Welcome to the scintillating world of Surabhi. You've seen the wonders and glory of Egypt in our program. Now meet its people and experience their culture. Okay? हमारा आज का सवाल भी मिस्र की धरती से है। हम कुदरत की देन नील नदी के बिल्कुल करीब हैं। अलबत्ता इंसानी हाथों से बनाई गई एक खास नहर से ज़्यादा दूर नहीं। आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल। क्या आप बता सकते हैं उस खास नहर का नाम जो मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ती है?
सवाल एक बार फिर सुनिए, आई रिपीट दिस, सवाल एक पूरा ब्रेथ मत। आज का हमारा सवाल भी मिस्र की धरती से है। हम कुदरत की देन नील नदी के बिल्कुल करीब हैं और इंसानी हाथों से बनाई गई एक खास नहर से ज़्यादा दूर नहीं। आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल। क्या आप बता सकते हैं उस खास नहर का नाम जो मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ती है? सवाल एक बार फिर गौर से सुनिए। आपको उस खास नहर का नाम बताना है जो मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ती है। Can you tell us the name of that waterway which links the Mediterranean Sea with the north end of the Red Sea? Famous water. Okay. आपको उस नहर का नाम बताना है जो मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर यानी रेड सी से जोड़ती है। Can you tell us the name of that very famous waterway that links the Mediterranean Sea with the north end of the Red Sea? अंग्रेजी क्या है? Egypt. Not far from the river Nile, there. Stand by. Rolling. Action. Since we are in the historic land of Egypt, our question is based in Egypt. Not far from the river Nile, there is a very famous artificial man-made waterway system in Egypt, which is hailed as one of the most modern and great whatever. Okay, yeah. Ready? Since we are in the historic land of Egypt, our question today is also based in Egypt. Not far from the river Nile, there is a there is a very famous. There is another artificial man. Another? Not another. There is a very famous artificial man-made waterway system in Egypt, okay, which is hailed as one of the greatest modern engineering marvels of the world. Okay. Since we are in the historic land of Egypt, our question today is also based in Egypt. Not very far from the Nile, there is a very famous artificial man-made waterway system oh, sorry. Since we are in the historic land of Egypt, what? Sorry. Since we are in the historic land of Egypt, our question today is also based in Egypt. Not very far from the river Nile, there is a very famous artificial man-made waterway system in Egypt, which is hailed as one of the greatest modern engineering marvels of the world. Can you tell us the name of that waterway system that links the Mediterranean? Sorry, I'll repeat this. You can read it out. Yeah. Okay. Can you tell us the name of this waterway system which links the Mediterranean Sea with the north end of the Red Sea? I repeat the question. You have to. Huh? Famous boat. Okay. Can you tell us the name of this famous waterway system which links the Mediterranean Sea with the north end of the Red Sea? I repeat the question. You have to tell us the name of that very famous waterway which links the Mediterranean Sea with the north end of the Red Sea. Rolling. Action. इस मशहूर नहर को एक दिन में नहीं बनाया गया था, बल्कि इस नहर के निर्माण के साथ वो सदियों पुरानी कोशिश कामयाब हुई जो पूर्वी और पश्चिमी जहाजरानी की दुनिया को जोड़ती है। लगभग 100 वर्ष पहले काउंट फर्डिनेंड द लेसेप्स ने सब है या थी? जोड़ती थी? बराबर है। जोड़ती है। चलिए, क्योंकि मेरा निकल गया इसलिए मगर अगर ऐसा फिर नहीं निकलता तो कर लो। हाँ, आइए। क्या है पहली लाइन? इस मशहूर नहर को एक दिन में नहीं बनाया गया, बल्कि इस नहर के निर्माण की क्या? इस नहर के निर्माण के साथ ही एक मिनट, हाँ, ओके। इस मशहूर नहर को एक दिन में नहीं बनाया गया, बल्कि इस नहर के निर्माण की सदियों पुरानी कोशिश नहर के निर्माण के साथ हाँ, इस नहर को एक दिन में नहीं बनाया गया, बल्कि इस नहर के निर्माण की कोशिश वो करेक्ट बोल रहा था
चलो इस नहर के निर्माण को नहर के निर्माण के साथ ही ओके हाँ वो सदियों पुरानी हाँ हाँ इस नहर को एक दिन में नहीं बनाया गया था, बल्कि इस नहर के निर्माण के साथ ही वो सदियों पुरानी कोशिश कामयाब हुई जो पूर्वी और पश्चिमी जहाजरानी की दुनिया को जोड़ती है। लगभग 100 वर्ष पहले काउंट फर्डिनेंड द लेसेप्स ने इसे पूरा करके ही छोड़ा। आज रोजाना 50 से भी ज्यादा जहाज इस नहर से गुजरते हैं। और अगर आपका जवाब भी हमारे सवाल की रुकावटों से पार हो जाए तो फिर जहाज क्यों, इजिप्ट एयर की ओर से मिस्र की हवाई यात्रा बिल्कुल मुफ्त और उसके साथ मीना हाउस ओबरॉय में 4 दिन और 3 रातों की मेहमान नवाजी भी। और फिर आपको मौका भी मिलेगा ना इस महान कैनाल, इस महान नहर, आई कैन रिपीट दैट, और फिर इसके साथ आपको मौका भी मिलेगा ना इस मशहूर नहर, रिपीट, और इसके साथ आपको मौका भी मिलेगा ना इस मशहूर नहर और महान पिरामिड्स को भी करीब से देखना। भारत से विश्व का झरोखा अमूल सुरभि। नमस्कार। और इसके अलावा ये मशहूर नहर और महान पिरामिड्स को भी करीब से देखने का भारत से विश्व का झरोखा अमूल सुरभि। नमस्कार। Oh, no. This famous waterway was not built in a day. In fact, it was the culmination of centuries of effort to bypass the River Nile and create an alternate shipping route between the eastern and the western worlds. Finally, the canal was built over 100 years ago by Count Ferdinand the Lesseps. Today, more than 50 ships cross this waterway every day. Surabhi is your window to the world, to the because I should have said western to eastern world, because it's the other way around. Yeah, Sorry. Yeah. Rolling? Yeah, continue. This famous waterway was not built in a day. In fact, it was the culmination of centuries of effort to bypass the River Nile and to create an alternate shipping route between the western and the eastern worlds. Finally, the canal was built over 100 years ago by Count Ferdinand the Lesseps. Today, more than 50 ships cross this waterway daily. And Surabhi is your window to the world, to India, and to yourself. You can count on that. Namaskar. Okay.